simple notes for law students. BZU Muslim personal law. Q01. What do you know about waqf? Introduction definition. Permanent dedication of property for religious purpose. Objects of valid WAQF. Education. Prayer ground, mosque, Imam, Zaidgah, Dargah, Imam, Margatazia, hospital and dispensary, observance of death anniversaries of Waqif and members of his, her family, reading of Holy Quran in public, free boarding house, medical treatment. Conditions of valid WAQF, free, permanent, ownership necessary, certain, WAQF, property, should not under debt, leased, mortgage, plug, disputed, no restriction of will. Unconditional, WAQF, be enable adoption of creditor, B. Inalienable, WAQF, fix. Revocation of WAQF through will, X. Irrevocable, WAQF, G. Compulsory registration for rupees 100 or above 100 qualifications, major, B. Person of sound mind, C. Muslim or none. Power, A. Transfer of WAQF property, B. Renting out WAQF property, C. Sale of WAQF property, D. Mortgaging of WAQF property, E. Appointment of successor. F. Appointment of successor during Warzalban. Duties, A. Non-transfer of Police office, B. Care of WAQF property, C. Allowance of servants and officers, D. Leasing of WAQF property, agriculture land 3 year, non-agriculture land 1 year, E. Mortgaging of WAQF property, F. Sale of WAQF property. Conclusion. What is will? Wasiat. Introduction definition. A document for transfer of property from owner and which is effective after his death. Explanation of will or general rules about will in Islamic law. I types A. Oral, B. Written will, E. Parties of attestator, B. Legatee, E. Attestation by witnesses compulsory, at least 2 witnesses. IB. Essentials of valid will, A. Qualification of testator, major, sound mind, owner of property. B. Qualifications of legatee, even a minor, insane, non-Muslim institution. C. Subject matter of all properties, D. Declaration by testator with intention. Offer, nominee, E. Acceptance, legatee should accept offer. F. When does disposition of property take effect? After death of testator. B. Appointment of executor, types of will. Void will, invalid will, contingent, conditional, in favor of unborn child, in favor of partial heir. Valid will, A. Will in favor of heir, B. Will in favor of unborn child, C. Contingent, limitations or restrictions on powers of testator. A. Limitations till death of testator. B. Limitation in respect of persons, C. In respect of extent. Circumstances under which will can be cancelled. A. In favor of one heir or stranger. B. Property not more than 1/3 C. To unborn child. D. Death of legatee. E. Property sold before death. F. Future property. G. Contingent. H. Subsequent will for already willed property. Conclusion. Q03. Marriage. E. Introduction. Kinds of marriage. I. Valid marriage. E. Or regular marriage, E. Void marriage, essentials or conditions of valid marriage. I. Proposal, E. Acceptance, E. Proposal and acceptance in same meaning, IV. Persons of opponent sex, B. Major parties, B. Free parties, B. Witnesses, B. Consideration. Conversion of a regular marriage into valid marriage. I. Marriage with fifth wife, E. Marriage through unlawful conjunction, E. Marriage during Iddah period, IV. Marriage with idolatrous or fire worshipper, effects of irregular marriage. I. Effects before consummation, E. Effects after consummation, A. Wife's right of dower, B. Spouse's right of inheritance, C. Observance of Iddah period, D. Legitimacy of children, E. Children's right of inheritance. Effects of void marriage, I. Sexual intercourse, E. Mutual rights and obligations, E. Status of husband and wife, IV. Illegitimate children, B. Mutual right of inheritance when is a marriage irregular.
Opportunity A. Mother of man's wife, grandmother of wife, daughter of wife, granddaughter of wife, stepmother of man, step-grandmother of man, wife of son, wife of grandson, daughter, son, wife, IV. Fosterage A. Foster relations, razi ben, baya, bitaki, ben, or ben. What marriage? Introduction, meanings, explanation. A. Who can be parties to what a marriage? I'm, she, a male. E. Women. B. What are legal incidents of what marriage? I'm, mutual right of inheritance, children's right of inheritance. E. Now, evidence about term of what a marriage and continuation of cohabitation. IV. Evidence about term of what a marriage and continuation of consummation. B. Dissolution of what a marriage. B. No right of divorce. B. End of what a marriage. B. For expiration of fixed term. B. Dower in FTTA marriage. X. Entitlement to full dower. Y. Entitlement to half dower. Z. Deduction of proportionate part of dower. X. Maintenance in what a marriage conclusion. Q. Four modes of dissolution of marriage. Introduction definition. Separation between spouses initiated by husband is called talaq. Different modes of dissolution of marriage or pronouncement of talaq. I. Apostasy due to rejection of Islam. E. Death of husband or wife in case of death of any of both. E. Divorce. A. Divorce initiated by husband. I. Talaq son of X. Talaq Hassan. Y. Talaq Hassan. E. Talaq omitted. E. Isla IV. Harvey. Divorce initiated by wife. I. Talaq Tafwiz. E. Kulasi. Divorce with mutual conscience, with mutual understanding. IV. Option of puberty, right to dissolution of marriage contract of minor made by any guardian else, his father and grandfather, when he become adult. B. Option of repudiation. A fraudulently marriage contract of minor by his blood relations. B. The end. Allegation of adultery against his wife before some court. Effectiveness of talaq. I'm sending notice to chairman union council. E. Sending copy of notice to wife. E. Punishment against violation. IV. Effectiveness of talaq. B. Constitution of arbitration council. Pregnant wife conclusion. Q. 05 Guardian. Wali. Introduction. Types of subject matter. Guardian for property of minor. Guardian for minor person. Types of guardian for property. Legal. Father. Father's executor. Grandfather. Grandfather's executor. Testamentary. Guardian appointed by executor. By court. De facto other than legal, testamentary or by court. Types of guardian for minor person. Mother. Father. Brother. Sister. Female relatives. Male relatives. Parental relatives. Duties. Liabilities of guardian for both subject matters: protection, benefit, maintenance, health, education, welfare, religion, removal of guardian. I. Abuse of trust. E. Failure to perform duties. E. Incapacity to perform duties. IV. Ill treatment or negligence. V. Disregard of provisions of Guardians and Wards Act. V. Disregard of order of court. V. Conviction of offense. V. Adverse interest. X. Cessation of residence within local limits of jurisdiction of court. X. Cessation of guardianship under personal law of minor. G. Bankruptcy or insolvency. Factors for appointing a guardian of minor by court. Welfare, age, sex, religion, character, social status, wishes, appearance, preference of minor. Qualifications of guardian by court. Conclusion. Q. 06 Muslim Personal Law 1962 Act. Introduction. Salient features of West Pakistan Muslim personal law and succession prior to Actings of 1984. Termination of limited estate under customary law. Cessation of further operation of certain wills. IV. Devolution of property on termination of life estate in certain wills. E. No retrospective operation. Conclusion. Main heading 1. Introduction. As far as introduction is concerned, the introduction of blank is very important. To understand blank in a better way, we can say that blank plays a vital role to identify the matter. 2. Definition. According to the definition from Black's Law Dictionary, blank underscore is
is blank. 3. Concept 4. Explanation 5. Main point 6. Importance 7. Conclusion 8. Summing up. स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा इसमें एंड पे मैंने कुछ मेन हेडिंग्स दी हैं। मेन हेडिंग से मुराद ये है कि आपका जो भी क्वेश्चन शुरू होगा, हर क्वेश्चन में आप कुछ हेडिंग्स देना जो है वो कंपलसरी है आपके लिए। जैसे कि एक हेडिंग जो है वो इंट्रोडक्शन की होगी। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं एज पर इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, या फिक्र लिख सकते हैं और आगे उस टॉपिक के बारे में डिटेल बताएंगे, या फिर आप लिख सकते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश इज। जैसे अगर आप तलाक के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे दैट इंट्रोडक्शन ऑफ तलाक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डैश इज अ बेटर वे वी कैन से दैट प्लेज अ वाइटर रोल टू आइडेंटिफाई द मैटर। इस किस्म के फिक्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी हेडिंग आपकी जो है वो हमेशा डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फ्रॉम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, या एज फॉर एज द डेफिनेशन इज कंसर्न, या आप लिख सकते हैं इज डिफाइंड एज। तीसरी जो आपकी मेन हेडिंग होगी वो कंसेप्ट की होगी। कंसेप्ट के बाद कि मेन कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगी। एक्सप्लेनेशन के बाद मेन पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंस होगी, कंक्लूजन और समिंग अप होगा। तो इसका मतलब है कि आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आप 8 हेडिंग जो है एटलीस्ट जरूर देंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। मजीद मैं वजाहत कर दूं इस पूरे पेजेस की, तो इसमें ये शॉर्ट और सिंपल नोट्स तैयार किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे BZU यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और टॉपिक इसमें है मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसमें जो मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं वो इसमें डाले गए हैं। जैसे कि वक्फ के बारे में क्वेश्चन अक्सर जो है वो आ जाता है। वक्फ के बारे में बताया गया कि इसकी डिटेल है वही जो हमने पहले हेडिंग कंसर्न की कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स हैं वो 2 किस्म के स्टूडेंट्स हैं, शिया और सुन्नी। तो अगर जो है वो शिया और सुन्नी दोनों को मिला के मैंने लिखा है तो दोनों के फ़िक़्ह में मुख्तलिफ जो है वो वक्फ के बारे में ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इसके बाद कंडीशंस लिखी हैं, क्वालिफिकेशंस हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होंगी। जो वक्फ करना चाहता है उसकी क्वालिफिकेशन कि वो मेजर हो, मीन कि उसका जो है वो बालिग होना ज़रूरी है, साउंड माइंड के वो आकिल हो। उसके बाद मुस्लिम या नॉन मुस्लिम दोनों जो है वो वक्फ कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ विल या वसीयत। वसीयत से क्या मुराद है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, वो यहाँ पे डिफाइन की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो इसी में विल में टाइप्स ऑफ विल हैं कि हमारे पास जो विल्स हो सकती हैं वो वाइड विल हो सकती है, वैलिड विल हो सकती है। इसके बाद कंक्लूजन है इसका, मैरिज निकाह के बारे में है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में निकाह के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो काइंड्स ऑफ मैरिज हो सकता है, वैलिड, इरेगुलर और वाइड मैरिज। इसके आगे फिर वजाहत की गई है कि इन तीनों की फर्दर क्या किस्में हो सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के तनसीख निकाह जो है वो किन किन सूरतों में हो सकता है वो डिफाइन की गई हैं। इसके बाद गार्डियन, वली, वली के बारे में बताया गया कि वली कौन हो सकता है और वली की ज़रूरत कहाँ पेश आती है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है 1962 एक्ट, उसके बारे में वजाहत की गई है। और उसके बाद फिर कंक्लूजन है इनका। उम्मीद है कि ये अगर आप इन नोट्स का बगौर मुताला करें तो बहुत कम टाइम में आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस टॉपिक के अंदर।